Guys, any doubts you are having? Any assignments, previous assignments? Or if you want to learn about Git commands, you will get the lecture video on Slack today. Should we summarize all the Git commands that you need to follow? That will be helpful, I guess. Correct? Yes or no? Just give me a sec. Okay, let's start with the basics only. Everyone knows how to create Git repositories. Is my screen visible to you? Okay. Suppose you are at your GitHub main page. How to create the new repository? Can anyone tell me? You can unmute yourself as well. So from new repository, there's option new. There is the option new repository. Yes, sir. Just click on this, and what you will find is choose an owner. Choose an owner as you. Repository name, suppose demo cap9. Here you can see private or public. I will make it public. You can add readme file or you can just remove and then just create repository. Okay, you will get your repository here, and now you need to access it from your VS Code, correct? So what you need to do is clone this in your desktop or wherever you want. I have copied this. Let me open my VS Code. So suppose I want to clone it in my cap9 folder. Okay, so what I need to do is firstly go to the desired folder where I need to follow, clone it, cd. Currently I am in cap9 folder. Yes or no? Simple. But my cap9 is already a repository. So what I need to do, let's go to the desktop. Desktop पे गया मैं. Guys. Let me create a new folder here. Folder. So from that folder only. I have opened my desired folder where I need to clone my repository. Afterwards, what I need to do, just open the terminal from here. I suggest you to always use git bash. It is most compatible. Then what you need to do is, okay, let it open. Okay, the command for that is git clone and then paste your URL that you have just copied. If I click enter, that repo will be cloned here. Is it visible to you? Okay. So before running any git command, firstly you need to integrate. Firstly, you need to integrate your GitHub account to this VS Code. For that, what you need to do, you need to run these commands: git config global user.name. Afterwards, you need to write your username. Okay. And what is your username? You can see on your GitHub. This is my username, Rahul Ajay 34. Okay. You need to put it in curly braces, not curly braces, double quotes. Rahul
Ajay 34. This is only one time you need to do in your VS Code. Hit enter. My username is config. Now you need to enter your email ID as well. Git config global user dot email, and you need to put your email in. My email is rahulajay34@gmail.com. Fine. If I hit enter, all these things will be configured. Fine till now. Any doubts? No. So now what you need to do, currently I am in the demo folder, which is not my repository. My repository is demo cap9. So I have to move there. Configuration is needed because you are pushing your code from VS Code to GitHub. Correct. Without configuration, it will not allow you to push and commit. Fine. That's why it is needed. So now to go to my demo cap9, cd demo cap9, enter. I am in the correct folder. Now, suppose I want to create a file. So first thing is, if you want to create a file under this, you can write like this, abc.html. It will be created. No issues in that. You can write any code there. It will be created. But suppose you want to create the file from here. So what is the command for that is touch. Suppose I want to create a JS file, demo.js. Hit enter. One file will be created. Can you see that? Yes or no? Okay. And here also you can write any code. Console.log. Suppose I want to write hello. Works. Now, after saving all these, if you want to push these files on your GitHub repo, for now, if you see, my GitHub repo is empty. If I refresh also, there is nothing inside it. Yes or no? Even though I have coded there, but I have not pushed it yet. Yes or no? So to push it, you need three commands. First is git add. If you use git add space dot, all the new files will be added to your repository directly. If you want to add one by one, you can add like this, git add abc.html. It will be added if you want to push only one file. Okay. But now if I want to push all the files, I'm using git add space dot. Hit enter. Now you need to commit. Git commit space -m, then your comment basically. New files added. Now you can create any file using touch command. It is not necessary to create any choice file. Enter, you will see two files added. Now to push it, directly use git push. Enter. It will be pushed to your GitHub account. Okay. Let's see if you have refreshed now, you will get all the files here. Visible? It is that easy. Guys, any doubts here? यार गिट ऐड से आप फाइल्स कौन कौन सी ऐड करनी है वो बता रहे हो, और उन फाइल्स में आपको क्या कमेंट डालना है, क्या ऐड किया है आपने, उसके लिए आप गिट कमिट यूज करते हो. ओके. नो डाउट्स. इजी. Okay. So those were all the basics command for today. Once you practice more on GitHub, you will learn many commands after. Okay, let me stop sharing my screen. If now any doubts you guys are having in any of the assignment, you can tell. Santosh, there is nothing major difference between main and master. You can edit these things in your GitHub settings. Okay, just the way. Correct. Whenever you are changing your code on VS Code in your repo, and if you want to push it, just use this command: git add, git commit, and git push.
It will be updated in your browser on your GitHub. Okay, guys, please raise your hand if any doubts. Please come. Hello, hello. Am I audible, sir? Yes, you're audible. Sir, actually, I have doubt in mock evaluation question. The wish question. Wish. Okay, let's see it. You can share your screen. Okay, I'm sharing my Rahul screen. Verma. Rahul Verma is saying my LMS and GitHub same email is not there. So what you need to do, Rahul, is you need to change your GitHub ka email that you have registered on your Masai. Okay. When you go to settings, you will see a email section. There you can change your primary email to your Masai repo. Sir, is my screen visible? Yes, visible. ओके सर, मैंने पूरा कोड कर रखा है। जब मतलब मैं वो भी चेंज कर रहा हूँ ना, टेस्ट केसेस भी अगर चेंज कर रहा हूँ तब भी आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये पार्शियली एक्सेप्टेड दिखा रहा है। Okay, wait. See, you have got the question wrong. So suppose if it is WIHS, what should be my answer? 1 and 1. Not 1 and 1, 1 and 2. These words can be jumbled also. Okay, still you are Okay. getting the correct answer. That is fine. But suppose you will be having instead of what you are doing is you are creating an object, string पे आप चला रहे हो और सबको वो दे रहे हो, ठीक है? Max is infinity if object of key is lesser than max. Okay, अभी इस केस में क्या होगा ना आपका if s की जगह मेरा a होता है तो what should it give me? 1, that is working fine. सर इसमें पहली लाइन मिसिंग है। जब हम इनिशियलाइज करते हैं WISH को नहीं, that is fine. OBJ में 0 से। That is no issue. Object of key, if it is lesser than max, you are saying, and key should be either WISNH. Okay. सी इसमें इशू क्या है ना आपका कि अगर आपके पास यहाँ पे WWW 8 बार W है तो व्हाट शुड बी माय आंसर बताओ? सर 0, 1 and 0. बट विल यू गेट 0? Okay. There is some issue in the code. Okay, just debug it, it will be fun. Okay, if I will give you a solution, it will not be satisfying to you. Just solve, try to solve. Okay, हाँ, I will try. ठीक है. Thank you, sir. ठीक है. Any other person who is having any doubts, please raise your hands. सुजीत, आपका आप जब भी गाइस गिटहब का यूजर नेम बना रहे हो, नॉट यूजर नेम, गिटहब की कोई भी रेपो बना रहे हो तो मेक श्योर दैट उसमें स्पेसेस ना हो और इनिशियलाइज करो किसी अल्फा अल्फाबेट से. डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स. इट विल इट इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर. ओके. यस सुजीत, व्हाट्स योर डाउट? What is the use of infinity? So infinity and minus infinities are the extreme numbers in JS. If you use plus infinity, it means that it is the greatest number that your JavaScript supports in an integer. If you want to declare any minimum variable, you use infinity, so that if you compare it with anything else, it will always be low. Okay. Guys, no doubts? Rahul Verma, what is not happening?
सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ एक बार। हाँ, आई गेस आज वो गिटहब का सर्वर डाउन है ईमेल का, तो वो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करना है ना। वो ठीक आप है ईमेल सर। सेक्शन पे नहीं जा रहा होगा ना, वही कह रहा हूँ। हाँ हाँ, उस पर जा नहीं रहा। हाँ, वो सर्वर डाउन है उनका। अच्छा, ओके सर। ठीक है। Guys, no doubts, all assignments solved. ठीक है, if you are not having any doubts, you can drop off from now and make sure that you are practicing the questions. You want to. चलो ठीक है, good evening guys, bye. Yes, खुशी, any doubts? खुशी गुप्ता. I will be publishing before 12, I guess. Assignment I can explain you if you can share your screen. Yes, Anup. स्क्रीन शेयर करें तो हाँ. हम्म, शो हो रहा है हाँ, विजिबल है. सर सर, इसके बाद क्या करना है? नहीं, आफ्टरवर्ड्स आपको कुछ अभी करने की सॉरी। जरूरत नहीं है. You will get a Masai repo in tomorrow, I guess. Tomorrow night. उसमें आपको ओके अपना सर। फाइल्स डालने हैं. ओके सर। सर स्टॉप कर रहे हैं। हाँ, you can stop. Khushi, are you sharing the screen? Guys, the form is already rolled out. If you have any issues, please type your queries there. Okay, this assignment, you guys are not able to understand. Khushi, can you please give me the access? Okay, so this is the third assignment of your GitHub. What it is saying is, check whether the number is prime or not, and you have to work in a team. So DM your friends to collaborate with you. So what you need to do is, member one will create a repository, और जो भी repository का नाम है, it is given to you here, and add member two as a collaborator. I think yesterday in the session you guys know how to create a repository and add a collaborator, correct? अभी मेंबर वन क्या करेगा ना, मेंबर वन एक प्राइम प्रॉब्लम का फंक्शन लिखेगा, वो भी इनकरेक्ट. ओके, जानबूझ के उसको इनकरेक्ट कोड लिखना है. आफ्टर कंप्लीशन ही विल पुश द कोड इन द रेपो. यू ऑलरेडी नो हाउ टू पुश द रेपो. नाउ मेंबर वन से हो नहीं रहा है तो वो मेंबर टू से मदद मांगेगा. मेंबर टू क्या करेगा, आपकी रेपो को क्लोन करेगा और मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ रेपो एज, नहीं प्राइवेट भी चलेगा if he is a collaborator, but make sure it is public so that we can check it. तो आप क्या करोगे, मेंबर टू से हेल्प मांगोगे, मेंबर टू आपकी रेपोजिटरी को क्लोन करेगा
नाउ मेंबर 2 जो है वो एक ब्रांच बनाएगा. आई गेस यू नो दी हाउ टू क्रिएट द ब्रांचेस. ओके, सो मेंबर 2 ने ब्रांच बनाया. ब्रांच का नाम है M2 कोड फिक्स एंड ही विल चेक आउट टू दैट ब्रांच. अभी मेंबर 1 क्या करेगा? मेंबर 1 भी अपनी एक नई ब्रांच बनाएगा. ओके, और उसका ब्रांच का नाम होगा M1 कोड फिक्स और वो उसके अंदर जाके कोड लिखने वाला है अभी. नाउ अभी क्या होगा, मेंबर 1 और मेंबर 2 विल वर्क ऑन द प्रोग्राम एंड फिक्स इट. तो दोनों फिक्स कर लेंगे. ओके, अपनी अपनी ब्रांचेस में, ना कि मेन में. मेंबर 1 क्या करेगा, अभी पुश करेगा कोड को अपनी ब्रांच में और पुल रिक्वेस्ट को रेज करेगा टू मर्ज इट इन द मेन ब्रांच. ओके, सेम मेंबर 2 भी करेगा. मेंबर 2 क्या करेगा, पुश करेगा अपनी ब्रांच में और PR लॉन्च करेगा. नाउ देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट. व्हाई देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होगा क्योंकि मेंबर 1 एंड मेंबर 2 ने अपनी अलग अलग ब्रांच में कोड लिखा है और कोड सेम नहीं होगा. आई गेस अगर दो लोग सेम प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो इट इज नॉट दैट कि लाइन बाय लाइन सभी कोड सेम होगा. तो कोड आपको जानबूझ के अलग रखना है दोनों का. और जैसे ही वो दोनों PR रेज करके उसको मेन में मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट. अभी कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएगा वो आपको देखना है गिटहब पे. और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको दोनों मेंबर्स एक साथ बैठ के रिजॉल्व करेंगे और उसको मर्ज कर देंगे मेन में. दिस इज द थिंग यू नीड टू डू. अंडरस्टूड guys in the chat? Okay, just DM your friends and start working on it. And don't say in the chat that we don't have friends. Okay, any other doubts, guys? Yes, if no doubts, you can drop off. Yes, you need two guys. It is not compulsory that you will need two members from Masai only. If you have some other external friends, you can take help from them also. Yes, the upcoming assignments will be there on CP till your DOM is finished. Yes, that's a good thing that you will be getting your marks straight away. Okay, you can start integrating your GitHub to your Masai and you will get your repo tomorrow. चलो ठीक है भाई, बाय गाइस, गुड नाइट. सर, हेलो. Yes. सर, ये वाला प्रॉब्लम असाइनमेंट का रुकिए, स्क्रीन शेयर करें. हाँ, स्क्रीन शेयर करो. हाँ, सो के क्यों जाग रहे हो भाई? डाउट्स हुए तो पहले ही डाउट्स लेके रखा करो ताकि डाउट्स इसमें डायरेक्टली पूछ लिया. वेट सर.
Khushi, you will get next assignments, some on CP, some on Replit, some on Moj. Accordingly, you have to solve. सर इसमें करना है असाइनमेंट। आपने ज्वाइन कब किया? अनूप, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ज्वाइन कब किया आपने सेशन? हाँ स्टार्टिंग में। मैंने ये पूरा करके दिखाया ना आपको अभी। हाँ सो व्हाट्स द इशू? मतलब क्लिक आगे ऑन दिस प्रोसेस कैसे? प्रॉब्लम का नेम नीचे इंट्रो टू सीपी है ना, हाँ उस पर क्लिक करो। नीचे नेम, प्रॉब्लम नेम पे। ओके, ओके सर। यू नॉट श्योर व्हाट टू डू, प्लीज रिवॉच द रिकॉर्डिंग। ओके सर। Yes, after the integration is done, you will have a Messiah repo and afterwards उसमें आप अपना CP का assignment कर सकते हो। Bye guys, I'm ending the session.